नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम HCFI। मैं कृष्ण चावला, आपका दोस्त व आज के इस सेशन नॉन स्टॉप सेशन नंबर 109 नॉन स्टॉप सेशन नंबर 109 का होस्ट और आपका दोस्त आपके आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं HCFI के मेंबर्स के साथ साथ NGOs का, RWAs का, मार्केट एसोसिएशन का, टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन का और अपने सभी हेल्थ एजुकेटर फैमिली के मेंबर्स का। Our session will be in two parts today as usual. First part will be addressed by our mentor Dr. K.K. Kalra, and second part will be addressed by our guest speaker Dr. Payal Arora. I'll request all of you to keep yourself muted during the session, and I'll request Dr. Kalra to kindly start his session. Over to you, Dr. Kalra, and welcome to this session. Thank you, चावला जी। डॉक्टर पायल और सभी उपस्थित व्यक्तिगण का स्वागत है इस 109वें सेशन में हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। बिफोर वी स्टार्ट द मेन टॉपिक, एज यूजुअल मैं कोविड अपडेट ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये WHO का ग्लोबल डेटा देखें लास्ट वीक का, ये 8 जून तक का है, जिसमें कि डेटा 3 दिन पहले का होता है। 5 जून तक का पूरे वर्ल्ड में देखें आप तो ओवरऑल 12% न्यू केसेस और 22% डेथ्स की कमी आई है। ये कोमुलेटिव सारे रीजन 6 रीजन जो WHO को हैं, इनमें से 2 रीजन में ये देखें आप, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि 1% इंक्रीज इन केसेस, और दूसरा रीजन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जहां से कि 19% नए केसेस में इंक्रीज देखा गया। और डेथ्स जो हैं वो लगभग 5 रीजन्स में कम हुई हैं, एक्सेप्ट 1 वेस्टर्न पैसिफिक जहाँ की डेथ भी इंक्रीज 7% इस हफ्ते देखी गई है कंपेयर टू द प्रायर वीक। अगर ग्राफ देखें तो ये आप डाउनवर्ड ट्रेंड 3 महीने का जो डेटा है ये आप देख सकते हैं कि मई से डाउनवर्ड जो है मई कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ये जो है अभी भी लगभग 7 डे एवरेज जो है 5,24,500 के करीब नए केसेस की पूरे विश्व में ये नंबर्स हैं। इंडिया में देखें तो 3 महीने में जो पहले ये केसेस घट रहे थे आप देख सकते हैं ग्राफ में, अब पिछले कुछ दिनों से ये धीरे धीरे बहुत ही ग्रेजुअली धीमी स्पीड से केसेस थोड़े से जो नए केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आप ये देखें तो लास्ट 24 आवर्स में 8,822 केस, जो कि पिछले दिनों में 2,000-2,500 में फिगर चल रही थी, तो अब जो है जो ये स्लाइट इंक्रीज की वजह से 8,822 लास्ट 24 आवर्स में केस रिपोर्ट हुए हैं और 15 डेथ्स हुई हैं। इतने केसेस जो ये आ रहे हैं इंडिया में धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन ये अच्छा है कि हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं बढ़ा है। सिवियरिटी जो है इन केसेस की नहीं है इतनी, जैसे कि पहले हमने देखा कि सिवियरिटी इस टाइम ओमिक्रॉन की कम है, वही ट्रेंड अभी भी चल रहा है, पर केसेस जरूर बढ़ने शुरू हुए हैं। और टोटल वैक्सीनेशन देखें तो लगभग 195.5 करोड़ जो है, इससे कुछ लोगों को जो है ये डोज मिल चुकी है। अब ये देखें इंडिया में
उत्तर प्रदेश, गोवा, ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज है। गोवा में भी, उत्तर प्रदेश में भी लगभग, एक्सेप्ट हिमाचल में, जो कि टूरिज्म सीजन है इस टाइम, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत भीड़ है। और उस हिसाब से आप देखें केसेस का इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली नहीं है। ये एक अच्छा समाचार है। केसेस उस हिसाब से जितनी भीड़ वहां पर है उतने अधिक नहीं बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश में थोड़ा वेरी स्लाइटली 222 केस जो है 14 तारीख को नए रिपोर्ट हुए थे, और बाकी जगह आप देख रहे हैं तो केसेस कम है। हिमाचल में जहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो रही है आजकल, सिर्फ 18 केस 34 आवर्स में ही रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे केरला में देखिए जो कि 3 है, ये महाराष्ट्र, केरला और दिल्ली, जहाँ से कि केसेस मैक्सिमम जो है पीक में भी रिपोर्ट होते हैं। उनमें देखिए कंपेयर टू जो पहले हमने स्लाइड देखी, इसमें जो है ट्रेंड थोड़ा सा डेफिनेटली हाई स्पीड है, तो इसमें इंक्रीज जो है थोड़ा ज्यादा है। और आप देखें केरला में लास्ट 24 आवर्स में 2230, ये 7 डे एवरेज है, ये केसेस देखे गए। और पिछले जो है 24 घंटे में 1989 केसेस और 7 डेथ केरला से हैं। और हरियाणा से देखिए 7 डे एवरेज 352 केसेस की, और लास्ट 24 आवर्स में हरियाणा में है 430 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि 7 डे एवरेज जो है बढ़ चुकी है अब 2758 केसेस, और लास्ट 24 आवर्स में महाराष्ट्र में 2956 केसेस और 4 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी जो है लास्ट 24 आवर्स में 1118 केस और 2 डेथ रिपोर्टेड हैं। और दिल्ली में 7 डे एवरेज जो आ रही है वो महाराष्ट्र के कंपैरिजन में काफी कम है, 729। और लास्ट 24 आवर्स का डेटा जो है ये पिछले 1 महीने में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा केस जो है अब जो है लास्ट 24 आवर्स में दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। और चाइना में अब स्थिति कंट्रोल है, सिर्फ 210 जो एज पर रिपोर्ट्स अवेलेबल जो है 210 7 डे एवरेज न्यू केसेस की ही है। और साउथ अफ्रीका जहाँ से ये ओमिक्रॉन शुरू हुआ था वहां पर भी लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड आप ग्राफ में देख रहे हैं। वहां से भी जो है 7 डे एवरेज है 1263 केस की। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में भी अभी 1 लाख से ऊपर 7 डे एवरेज केसेस चल रही है। और यूके में जो है केसेस लगातार कम हो रहे हैं। यूके में देखा जाए तो सिर्फ 10,570 केसेस 7 डे एवरेज है यूके में, क्योंकि लोग जरा थोड़ा अभी भी केयरफुल हैं, वो प्रिकॉशन लेते हैं। यूएस में जो है लोगों ने एकदम प्रिकॉशन लेने छोड़े हुए हैं, लगभग वहाँ मास्क भी कंपलसरी नहीं है, इसलिए अभी भी जो है 1 लाख के ऊपर केसेस यूएस में देखे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अब कम है, पर अभी भी 28 लगभग जो है 26,000 7 डे एवरेज न्यू केसेस की अभी भी है। और जर्मनी में 60,630 की 7 डे एवरेज न्यू केसेस की, वहां भी थोड़ा सा अभी केसेस ज्यादा हो रहे हैं रिपोर्ट। ऐसे ही फ्रांस में 36,589 केसेस 7 डे एवरेज। इटली में 22,964 जो है 7 डे एवरेज न्यू केसेस की। और रशिया में सिर्फ अब 3,361, काफी कमी आ रही है। जापान में भी पहले से डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेंड आप ग्राफ में देख सकते हैं। अब जो है सिर्फ 14,670 जो है 7 डे एवरेज न्यू केसेस की है। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में वेरी ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही बांग्लादेश में,
देख सकते हैं आप, थोड़ा सा केसेस बड़े हैं, पर फिर भी सब 93 केसेस बांग्लादेश में रिपोर्टेड है 7 डे एवरेज। नेपाल में 9 केस, पाकिस्तान भी डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है, वहां केसेस में इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। भूटान में ओनली 1 केस 7 डे एवरेज, स्थिति का पूरे कंट्रोल में है। थाईलैंड में भी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ये था कोविड के बारे में पूरे विश्व में और इंडिया में क्या स्टेटस है। अब मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकी पॉक्स जो है 13 मई से जो केसेस आने शुरू हुए, WHO में जो रिपोर्ट हुए, तो 28 मेंबर कंट्रीज से ये जो है 4 WHO रीजन से ये जो है रिपोर्ट हुए मंकी पॉक्स। ये जो है अमेरिकाज, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में मंकी पॉक्स के रिपोर्ट हुए हैं। ये देखें डिटेल में, एज ऑन 8 जून को टोटल 1285 लेबोरेटरी कंफर्म केसेस मंकी पॉक्स के रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे विश्व में। इस WHO रीजन में जो रिपोर्ट हुए हैं फ्रॉम 28 कंट्रीज। ये वो कंट्रीज में से 28 कंट्रीज हैं जिनमें कि ये नॉर्मली जो है मंकी पॉक्स के केसेस नहीं देखे जाते। साउथ अफ्रीका में तो ये नॉर्मल लो एंडेमिक के है, कुछ केसेस देखे जा रहे हैं। ये जो 28 कंट्रीज वही हैं जो नॉन एंडेमिक, जहाँ के ये नॉर्मली जो है मंकी पॉक्स केसेस नहीं होते, वहां से ये 1285 जो है केसेस ये आए हैं। इसमें जो मेजॉरिटी जो है 87% जो केसेस हैं कंफर्म केसेस, वो यूरोपियन रीजन, यूरोप में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 87% जो केसेस जो है टोटल 1285 में से यूरोप के रीजन से है। और a continuous detection of virus and deaths reported in some countries in the African region, जहाँ की ये नॉर्मली एंडेमिक है, ये दर्शाता है कि हमें और रिसर्च करने की जरूरत है इस मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। ये टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सोर्स क्या है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा और हमें स्टडी करने की आवश्यकता है। और WHO जो ने इसको जो रिस्क है इस इन्फेक्शन का, ये ग्लोबल लेवल पे मॉडरेट रिस्क इसको कंसीडर किया गया है। ये था कोविड और मंकी पॉक्स का, यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो 6 महीने तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, 6 महीने के बाद बच्चा, जैसे ग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनका जो है सिर्फ जो है माँ के दूध से पूरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो 6 महीने के बाद हमें और जो है हमें कुछ फूड, कम्प्लीमेंट्री फूड शुरू करने होते हैं। वो डिटेल जो है इसके बारे में डॉक्टर पायल अरोड़ा आपको डिस्कस करेंगी। आई इनवाइट नाउ over to Chawla ji, and Chawla ji request to invite Dr. Payal. Thank you, Dr. Kalra. We have with us for the second session Dr. Payal Arora. She is MBBS MD Pediatrics and ex-assistant professor, JNM Medical College, Raipur. Presently, she is working as director and consultant at Yashoda Children's Hospital, Raipur. She is also visiting consultant at Shri Satya Sai Sanjeevani Hospital, Naya Raipur, छत्तीसगढ़। डॉक्टर पायल हमारे साथ आज पहली दफा जुड़ रही हैं, ये हमारी नई स्पीकर हैं। आज मैं इनका विशेष रूप से स्वागत कर रहा हूं आप सभी की ओर से। और डॉक्टर पायल आज हमारे बीच चर्चा करेंगी बच्चों की, जैसे डॉक्टर कालरा ने बताया कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कब शुरू करनी चाहिए, किस मात्रा में शुरू करनी चाहिए, किस तरह का आपको फीड बनानी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें डालनी चाहिए,
किस तरह की एलर्जी बच्चों को हो सकती है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये एक हमारे सामने एक समस्या पेरेंट्स के सामने रहती है। तो उन सभी समस्याओं का आज समाधान करेंगी। इन सभी विषयों पर she'll throw light and she'll guide us. Over to you, डॉक्टर पायल। और आपका मैं स्वागत करता हूं आज के इस 109 सेशन में। हम ये सेशन डॉक्टर के अग्रवाल के बताए रास्ते पर चलकर ये उन्होंने शुरू किया था, और जो हमारे एक अराउंड 1000 हेल्थ एजुकेटर्स की टीम को डॉक्टर के अग्रवाल ने कोविड के दौरान लोगों की मदद करने के लिए तैयार किया था, उनके लिए ये वेडनेसडे सेशन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ताकि हम उनको एजुकेट कर सकें on different diseases, different things, so that they could help themselves and they could help the society at large. With this intention, with this objective, this session was started, and we are carrying on his legacy. So welcome to you, Dr. Payal. And Dr. Payal, I hand it over to you to start this session. You are muted. Please unmute. Dr. Payal, please unmute. Dr. Payal, please unmute. Yes, now you can speak. Thank you so much, sir. Thank you so much. I feel very privileged and honored to have been given this opportunity to come on this very elaborate forum, this very prestigious forum of HCFI, which, as you mentioned, Dr. K.K. Agrawal sir had started, and he did a tremendous work. And this work of educating over 1,000 people over COVID-related things, and then we are carrying it forward with other topics. It's a great effort. First of all, I pay my tributes, my respect, my regards to Dr. K.K. Agrawal sir for starting and doing this tremendous job. And I thank Dr. Krishan Chawla sir for giving me and introducing me to this platform and giving me this opportunity. And actually, I was introduced here by my sister-in-law, Dr. Sonal, who is a frequent speaker here. So I thank her for giving me this opportunity. And to start with my today's topic, actually, when I got this opportunity, I was a little confused what topic should I choose. But then I thought I would not like to discuss some disease or some abnormality of children, but rather discuss a topic which is a day-to-day requirement, which is necessary for day-to-day practice as regards to children, and which is necessary for everybody, like feeding of an infant. Generally, what we think, it's a responsibility of the mother. In our society, generally we feel बच्चे को खाना खिलाना तो माँ की जिम्मेदारी है, and the mother should know everything about it. But to start my topic, first thing I would say that I feel feeding of a child, it is very important for its physical growth as well as mental growth and social growth of a child. And it's not responsibility of only the mother of the child, it is responsibility of the entire family, the entire support system which she has, and the entire surrounding. It is not necessary that every mother is in touch with a pediatrician who can guide her, but she is there with the family members who can guide her, with a general practitioner who can guide her, a health worker who can guide her. So everybody should be knowing the correct things what we have to do as regards to the feeding of the child. So I chose this topic, and without any delay, I would like to start my topic. I'm sharing my screen. Is my screen visible? Screen is visible, but the slide has not started. Yeah. Yes, it's okay. So my today's topic is complementary feeding. Feeding of an infant beyond 6 months of age. As Thala sir also mentioned that it is very, till 6 months of age, we all know that babies are on exclusive breastfeeding, and after 6 months, we start them feeding other things. We start with the complementary feeding. So basically today this presentation of mine is based on guidelines drafted by Indian Academy of Pediatrics,
they have recently drafted these guidelines for parents. So basically, these guidelines have been drafted for the information and education of parents and the society. So they have based these guidelines are based on 10 frequently asked questions. Generally, in our OPD, we get every new mother generally comes and asks these questions, and there are a lot of confusion regarding these. So my presentation is basically based on these few questions, and I'll be answering them one by one. So the very first question is, what is complementary feeding? So the first thing I would like to highlight here is, before some time or even now, the word weaning was used. We have to wean the child after 6 months. But now this word weaning has been replaced by complementary feeding. Weaning का मतलब हिंदी में होता है छुड़ाना, किसी चीज को छुड़ाना. But the concept here is that we are not weaning the child of the breastfeeding. The breastfeeding has to be continued till 2 years of age, but we are complementing the breastfeeding with semi-solid food or age-appropriate food. The first thing is that the weaning word, which was used earlier, has been now replaced with complementary feeding, as we are complementing the breastfeeding. And this first 2 years of life, as we all are aware, is a very critical period for the growth and development of the child. And giving the child the right amount of nutrition and the right type of nutrition is our utmost priority. And all the health organizations, WHO, Government of India, everybody is now focusing on the concept of first 1000 days of life, maternal and child health. Like it starts from the conception of pregnancy, like the first 9 months of the fetal life plus the next 2 years of the life, they form the first 1000 days of life. And now at present we are focusing on these first 1000 days of life, because these are the most critical period of life, and whatever practices, whatever problems we face during this has repercussion for the whole life of the child. So till first 6 months of the child, optimal breastfeeding is must. Then timely and appropriate complementary feeding. The word timely and appropriate is very important here. Timely, it has to be started around 6 months, not delayed, and appropriate type and quantity of feeding is very important. And here we all know, we all are aware of balanced food. So it is important for everybody, not only a child, but for everybody. So we'll be discussing it in later on. Now, when to start complementary feeding? This is very clear. When का answer सबको पता है, everybody knows. 6 months के बाद we have to start. But why? Why is very important here. Because कोई भी चीज अगर हम बोल देते हैं ये करना है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है. बट उसको ये जानना कि हमको क्यों करना है, उसको जानते हुए उसको करने का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है. सो दिस 6 months इज नॉट अ रैंडम फिगर. किसी को ख्याल आया और उसने 6 महीना बोल दिया, ऐसा नहीं है. देयर आर रीजंस, देयर इज रैशनैलिटी, देयर इज रीजनिंग कि हमको 6 months पे क्यों स्टार्ट करना है. पहला फर्स्ट पॉइंट इज दैट द न्यूट्रिशन व्हिच ब्रेस्ट मिल्क गिव्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड. तो धीरे धीरे अराउंड 4 months to 5 months के बाद the nutritive value of the breast milk goes down and the requirement of the child increases. But these are the factors of the breast milk. But baby के development के भी कई ऐसे points हैं which appear around 6 months. So to be right in starting the breastfeeding is very important. The timing is very important. The biting movement of the jaw, these start to appear around 5 months of age. Swallowing of solid food, it starts around 6 to 7 months of age. These are the developmental milestones of a child. The side-to-side movement of the tongue, it develops around 8 to 12 months of age. And so, since these development is happening in the child, we have to capitalize on that milestone. Once the child is having these biting movements
he is able to swallow the food, we are introducing the food, it will help us to capitalize on this developmental milestones. If we miss this period, we have many children in the OPD where the complementary feeding is delayed. Parents do not start, they start around 8 months, 9 months, but at that time then the child becomes a poor chewer, because when these milestones were appearing, he was not given those the food items, or that type of feeding was not done. So they become to neglect that chewing, they are not used to that chewing. I feel there are studies when we compare these milestones and these feeding types. So if we are they chew the food, they start to swallow the food, and once this critical time is missed, then there is problem, there is difficulty in teaching them the these things like chewing, swallowing. It becomes difficult for them. Other reasons are that head and neck control, hand mouth coordination. Generally, there is teething happening. They have a tendency to bite things, mouth things. So at this, they have a tendency to pick everything and put it in the mouth. If you provide items, the food items, and then the baby tries to put it in the mouth, that way he will be self-dependent. He will be learning the process of self-feeding. So we have to capitalize these milestones of the baby. The intestines also become mature and ready to digest cereals and pulses, and these are the factors. So this is the reason why the period of 6 months has been chosen as the correct period, and it is very important to start feeding at this particular time and not delay it. Now the most important, or the most elaborate point of this presentation is which food should be used for complementary feeding. So these are the some characteristics which a food or food item must have so that it is an ideal complementary feed. First thing, it should be easily available. The ingredients should be clean and safe. The method of preparing the food should be less time consuming. We do not want the mother to spare much of her time just preparing and arranging these food items, because that is the point where the problem starts. Today's point of modern age, everybody is busy. In urban areas, 80% of the mothers are working mothers, and this six are generally they have a maternity leave of 5 months, 7 months, and this is the time when they have to resume their work also. They have emotional pressure, they have the pressure of leaving the child at home, going to their workplace. So they have a tight schedule, they have a problem of managing their time. So there are easy, simple ingredients which are very good, very nutritious for the child. So rather than for some methods, we have to use a food item that is easily available, less time consuming, affordable for the family, locally available, and culturally acceptable. Nowadays, many parents, many families are in awe of the fancy fruits, which are imported fruits available in the market. They have a very high nutritive value, but they are preserved. They are imported from foreign. They are preserved in preservatives, cold storage. But it has been, I really feel confused when parents ask me, or they are in the concept of feeding their child with avocados, with kiwis. They will neglect the banana, the seasonal fruits, orange, grapes, which are available in our country, which are locally cultivated, locally available, but they will choose for these fancy fruits, fancy items. There is a lot of confusion, and day-to-day practice, we generally see people coming with these queries. So nothing is just magic, nothing will work as magic. We have locally available fruit, equally good.
So there is no need of going for these fancy fruits, fancy items for the child. Our locally available fruit, locally available goods are equally good or even better for the child because they are fresh. Food should be easily digestible. The taste and palatability of the food is very important. Here, palatability, I have seen many parents coming with the concept of giving the child food without salt, without sugar. More of salt, more of sugar is harmful. We are all aware of that. But it is excess of salt and excess of sugar. It is not no salt and no sugar. It is not mentioned anywhere. No studies have shown this. That we have to give no sugar and no salt to the infant. I have seen many infants who are given food that has no salt, no sugar. It is common that they do not accept that feed. They are cranky all the time, and they choose to feed on milk only. They are poor eaters. So it is less of salt, less of sugar. Don't give excessively sweetened items, but a little bit of sugar, a normal sugar. At least the food should be palatable for the child. We have to start feeding with small amounts and then gradually increase the quantity with increasing age of the child. Other important thing is the consistency of the food should also change with the growth of the child. We have to start with a very soft, semi-solid type of food, and then we have to increase the consistency until around 1 year of age, children start to eat solid food also. Frequency and variety we'll discuss in the coming presentation. So, what generally that the eats the staple food of the family. In our country, we have a huge amount of variability across the nation, from north to south, east to west. There are very different type of food which we eat. So we have to feed the child the food which is staple for our family, for our locality, for our cultural practices. Like in the north, wheat is eaten more. In the south, rice preparations, idlis, dosas, they are prepared. So it is absolutely fine that we feed the child what is our staple food, what we are using in the family. There are n number of preparations of wheat, n number of preparation of rice that can be easily given to our child. So it's not that somebody has told that their baby is eating rice is good for him, so we are pushing the baby towards that. It's not necessary. We have to give children the staple food of our locality, our family. Staple foods in rural places, even they can be grown, the people can grow it in their homes also, and it can be easily used. These are very common precautions. This COVID era, I don't think much has to be pushed on this. Everybody is now aware of hand washing, cleanliness, cleanliness of food, cleanliness of utensils, the spoon, the cup, the boiled bowls which are using. Everything has to be cleaned, properly given to the child after cleaning. The other very important point is avoiding of feeding bottles. It is very necessary. This is also been stressed upon. Feeding bottles are to be avoided. The main problem with feeding bottles is maintaining the hygiene, maintaining the cleanliness with the bottles. So as pediatricians, we often discourage feeding bottles. The food should be safe to for the environment should be clean. Perishable food items have to be refrigerated, have to be heated before use, and we have to prevent drinking water also.
Now the consistency of the food. So here in the when we start the food, it has to be semi-solid but not liquid. Here we can see it has to be just, it should be just should not be dripping from the, just it should be semi-solid. So there's not very difficult, much difficulty in feeding the child, because if it is too thin, it spits around and creates a mess. More than 50 to 60% is wasted, and very little quantities received to the child. So it should be of the right consistency to start around 6, and around 8 months they can pick up the they can eat the family food. Important point is that food item that can be logged or that can cause choking, like nuts, grapes, hard items, that should be avoided. That we need we have to grind them or smoothen them and then give the child. If we want to give the nuts, we can give it. We can add to some cheese or some halwa, but it should be. डॉक्टर पायल कांटेक्ट, आप अनम्यूट कीजिए, यू आर म्यूटेड। डॉक्टर पायल अनम्यूट कीजिए जी। आपकी स्क्रीन भी चली गई। मैं इधर से चलवाऊं क्या? जस्ट मैं शेयर करती हूँ सर। In the screen is it? स्क्रीन हाँ अब आई है। विजिबल है सर? यस यस, स्क्रीन विजिबल है, आप विजिबल नहीं है। Should I start? यस प्लीज। So coming to the quantity, frequency, and the texture of complementary feeds. So as we discussed earlier, 6 to 8 months may we start with mashed foods or thick porridges. Thick porridges it could be sweet or salty, like items like khichdi, dalia, kheer, halwa, which is a little on the liquid side. So these are the foods which we can start. Mashed foods may mashed potatoes, mashed sweet potatoes, we use mashed banana, other fruits which are locally seasonal fruits that can be started around 6 to 8 months. Daily 2 to 3 meals along with the breastfeeding. At the beginning, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, तो क्या सपना आर यू देयर? सपना आप हैं वहां? एक मिनट डॉक्टर, क्या आपकी स्लाइड्स हम चला देते हैं तो आपकी आवाज शायद साफ हो जाए। आपकी आवाज बहुत कट रही है। सपना आर यू देयर? सपना सर, सपना जरा इनकी स्लाइड्स आप चला दो क्योंकि आवाज बहुत कट रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है, स्लाइड से कुछ हाँ, नहीं होता, नेटवर्क नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी जी।
इससे पहले वाली स्लाइड पे थे। सप्राइज से पहले वाली स्लाइड ले लो। So 9 to 11 months पे we can go to food items that are more solids, and basic intention by 9 to 11 months gradually हमको 3 meals जो हैं बेबी के वो सेट हो जाने चाहिए। मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच, डिनर, इस तरह का पैटर्न बेबी के लिए भी बन जाना चाहिए। और दिन में 3 मील्स जिसमें जो कि सीरियल बेस्ड मील्स हो, जिसमें कोई भी सीरियल हो, पल्सेस हो, वो वाला मील होना चाहिए। साथ में देयर शुड बी एडिशनल ब्रेस्ट फीडिंग and 1 to 2 snacks can be given to the child. Snacks में you can give any vegetable type of puree, or कोई there could be fruit, or sometimes then there biscuit, and that should be given as a snack to the baby. By 1 to 2 years, the baby should be feeding what the family, the concept of family pot feeding should develop in the baby by 1 to 2 years. Next slide. Now the other thing is that how we can modify the nutritive value of the food. We have the baby's stomach is small, the baby's capacity to eat the food is small. Baby will accept small amount of feed. So our intention is to give baby the maximum amount of nutrition in that small quantity of food. So that we can do by adding additional things in the food like ghee, jaggery, oil, butter. So whatever khichdi or preparation we are making for the baby, we can make it in ghee. A little bit of extra ghee or extra butter can be added to that. So the baby is going to eat only half katori, but that small quantity which we have added increases the nutritive value of the food. Similarly, using jaggery as a sweetener for the baby is very beneficial, but because it adds micronutrients to the food, and it is very good for the baby. If the protein content in food can be increased by adding pulses in all the preparations, like we make khichdis and all, that adds the protein value to the food. Even non-vegetarians can introduce eggs around 8 to 9 months. It can be easily introduced. Other fish, meat, it can be gradually included in the food. Different type of cooking methods also increase the nutritive value of food, like giving germinated food. Like there is a process of malting the cereals. Like once we germinate the cereal, it could be even wheat or pulses. These are germinated, then they are dried and then grinded and made into powder. That can be used as infant food, and it is very nutritive. It is amylase rich, and it is very energy dense food. So that is a very good option which to begin with mothers can prepare it and keep, and it is very easy for them to just mix it, make a smooth paste and give it to the child. Micronutrients like zinc, iron, vitamin D, vitamin E, calcium, phosphorus, these can also be added. There are commercially available sprinklers, but it's not a must. If we are giving fresh and healthy food with fruits and vegetables, it is not a must, but these are available which can be used if required. So next slide. We come to the place of milk and milk products in complementary. This we have actually discussed that micronutrients are there already in the fruits and vegetables, and that has to be included in the diet. So seasonal fruits locally available can be used. Next important point is the use of milk and milk products. So now in our society, it is milk and milk products are very much emphasized, actually overemphasized. Many families we see
they just till 8 to 9 months of age, the baby is on milk. और बहुत शान से दे विल कम एंड टेल हमारा बच्चा तो 2 लीटर मिल्क, 2.5 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क दिन में पी लेता है. बट that over emphasizing, over refeeding of milk is harmful for the child, because milk gives a sense of fullness to the child. The child is not able to feed much after the child has eaten taken that much of milk, and that becomes a problem. So the child then is not accepting feeds, is on milk feeds, and that is a problem. Next slide. Can we move to the next slide? Yeah. So milk is good, but in appropriate quantities. So here is a chart. Actually, we have discussed all these things. The avoidable food items are like things like biscuits, breads, pastries, chocolates, donuts, cakes. These complementary items can be used as an occasional snack, but they do not have to form the main bulk of the feed. Fruit juices, fruit drinks have to be avoided. Commercially available breakfast cereals are to be avoided below 2 years of age. We do not recommend commercially available cereals to be given to children below 2 years of age. And fried food with trans fat, trans acid, they definitely have to be avoided, because the habits which are formed during the infancy, they carry on to lifetime, and they are a predisposing factor to obesity, diabetes, cardiac problems, neurological problems in the future. Moving to the next slide, we are there is a thing called dietary diversity. So we have to maintain dietary diversity in the child. Minimum dietary diversity is consumption of 4 or more food groups among the 7 food groups that are there. In the next chart, I'll show you the 7 food groups, and the basic concept is that we should include at least 4 of these 7 food groups. And if we are including 4 of these 7 food groups, we will be giving at least 1 animal source and 1 fruit or vegetable source protein, which diet to the diet, and that would be great for the child. So moving to the next slide. Can we move to the next slide? So these are the 7 food items which are there. First is grains, roots and tubers, which include rice, wheat, maize, jowar, ragi, potato, sweet potato. Next will be the legumes and nuts. Third category is vitamin A rich fruits and vegetables. These are all orange, yellow, green vegetables, fruits like mango, carrot, papaya, tomato, etc. Other fruit and vegetables, which could include the fresh fruits are the flesh food, that is meat, fish, and other meat. So out of these 7 food groups, at least 4 has to be included in the child's diet on a day-to-day basis. That will make the food a balanced food, and which would be helpful for the child growth. So coming to the next, so what is the role of feeding in child's growth and development? So nutrition of the child, especially during the first 1,000 days of life, is very important for the optimal growth and development of the child. These feeding practices are satisfying and comfortable for the mother and child, and are also crucial for the emotional development of the child. So these feeding practices not only enhances the physical development of the child, they also develop the child's mental or emotional quotient also. These feeding times should be a time where the child or the caregiver, the mother, other family members should be spending a quality time with the child. This is the time with the mother can give attention to the child.
it increases the bonding between the mother or the caregiver and the family members of the child. So not only physical development, it is important for the emotional development of the child also. Next slide. सपना जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या डॉक्टर? हाँ जी सर। कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं आजकल चल रहे हैं। गैलरी व्यू में चलते हैं, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये शीर्ष जाएगा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Dr. Payal, since we have shortage of time और कुछ disturbance भी है, तो could you summarize it fast? उसको थोड़ा जी। brief में करके कर लें, क्योंकि आवाज भी नहीं आ रही है आपकी। Yes, yes, ठीक है। yes. जी 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 जी, we can move to the next slide. सपना next slide. So regarding commercially available feed, these are expensive. They have exaggerated health claims. Not advisable. It is advisable to use locally made, homemade food item that is useful. These can be used for once in a while, but not to be form the main bulk of the diet of the child. Next slide. So next is the relation of feeding to the early childhood and adulthood diseases. So what the child is given or the feeding pattern of the child in infancy has repercussions for adult health also. Undernourished child, there are studies which have shown that undernourished child also have a higher risk of adulthood diseases like heart problems, atherosclerosis, and in addition to it, it also has its disadvantages. Ways we have problems, the right nutrition is very important. Can we move to the next slide and then next slide. So there are many ethical issues and beliefs which hamper feeding practices. So it is necessary that we guide our children to and mothers to feed the child with the right type and quantity of the food item. Next slide. Let's move forward and go to the summary, I think. There are some food items that can cause allergy. This is very important, like cow milk allergy. Some nuts can cause allergy.
So these are to be avoided. We have to introduce one food item at a point, and then see if it suits to the baby, and then we can add another food item at another point of time. Lastly, can we move to the slide with the chart? There are some myths and beliefs which I just wanted to highlight here. Some age-old beliefs have कुछ खाने के तरह ठंडा होता है, कोई खाने का प्रकार गर्म होता है, ये हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि गुड़, स्पाइसी फूड, मटन, चिकन, पपाया, एग्स, mangoes, these are considered hot for the child, कि गर्म करता है. So this is a false belief and it has no scientific base to it, and it should be not thought of in that way. Some food items like banana, curd, dahi, buttermilk, लेमन या गुआवा या सिट्रस फूड्स लाइक मौसमी, संतरा, ये कई लोग नहीं देते हैं बच्चों को कि सर्द करता है, ठंडा होता है, उससे सर्दी हो जाती है, बट and ऐसा कुछ भी नहीं होता है. There is no base to it. Non-vegetarian food is considered harmful for the child. It is not. It is very good and it has a high nutritive value. अगर आप non-vegetarian हैं, आपके घर में बनता है, it is very well and good, you can give. अगर आप vegetarian हैं तो that is also absolutely fine. There are variety of food items जो हम use कर सकते हैं. कई बार सोचा जाता है that ghee is heavy to digest. So this is a very false belief, myth. Wheat, दलिया, सूजी को भी heavy माना जाता है. That is also absolutely false. And one last thing, मैगी, बिस्किट and marketed food items. कई लोग इन चीजों को बच्चों को जानबूझ के खिलाते हैं, जो weight gain में lag behind करते हैं, उनको बिल्कुल ही गलत है, because it will not help in the weight gain of the child and बहुत harmful effects होते हैं. So lastly, I will directly go to the take home messages or just summarize my presentation in the last two slides. Next slide. We have to start complementary feeding after completion of 180 days. Continue best just before this. इससे पहले वाली slide please. We have to continue breastfeeding along with the complementary feeding. We have to delay starting of complementary. Unmute कीजिए डॉक्टर पायल. They are muted. Avoid refined foods. Bottle feeding has to be avoided. Avoid feeding while watching television or mobile. Instead, play with your child, spend time with your child. Do not force feed your child. Avoid overfeeding and avoid food that can cause choking. Thank you so much, and I'm very sorry for the disturbances. I don't know why it was happening. I think this is the last slide. Dr. Payal, can we take up questions now if there are some? Yes, definitely. Any questions, please? हाँ, केशव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं. अनम्यूट कीजिए क्वेश्चन केशव जी. जी, आपको बात हुई. नमस्ते डॉक्टर. Namaste. One question comes to my mind that to children of 2-3 years old, some doctor advise lactoferrin and cholesterol, bovine cholesterol, as a complementary tablets in tablet form. What is your view on this thing? So what age group? 2 to 3 years age group. Product advice are bovine cholesterol powder and lactoferrin. Lactoferrin
is a protein that helps in absorption of iron. But I have not heard anywhere except some few doctors are prescribing. I want to have your view. In a child who has a normal weight and normal growth and अगर कोई बीमारी नहीं है और ग्रोथ ठीक चल रही है तो आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि ऐसा मतलब देयर इज नो रीजन फॉर प्रिस्क्राइबिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स डोंट रिकमेंड एट ऑल Child is बहुत absolutely रेयर child is absolutely okay in health into the सर एक हेल्दी चाइल्ड में देर इज नो नीड देर आर सम डिसऑर्डर्स या कुछ माल नरिश्ड या कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें कुछ एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है मतलब कुछ इस तरह की बीमारियां हैं सीलिएक डिजीज हो गया या इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है एंड उस समय एक्चुअली दीज आर मेड फॉर दोज डिसऑर्डर्स मतलब bovine colostrum. जी We have heard of human colostrum. Bovine colostrum will help human being. सर अभी अवेलेबल है और उसको मार्केटिंग भी बहुत किया जा रहा है बट स्टडीज से बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है तो इट हैज बीन मार्केटेड बट कोई बेस बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई हैं सो वी डोंट रिकमेंड फॉर हेल्दी चिल्ड्रन थैंक यू इंदु जी आप पूछिए अपना प्रश्न हेलो डॉक्टर my question is, because of some unfortunate reason a mother is not able to feed her child, then what type of milk should be given to the child? We generally avoid cow's milk in the first one. Sorry ma'am, आवाज ब्रेक हो गया। आवाज ब्रेक हो गई कोई दोबारा शिल जाए because of अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही है मदर तो हम जो अवेलेबल है मार्केट में वो ही एडवाइस करते हैं काउज मिल्क हम लोग 1 ईयर से लेस के बच्चों में अवॉइड करने के लिए होते हैं अगर ऑप्शन नहीं है अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो ही हम देते हैं और अगर देते भी है तो इट शुड बी गिवन एज इट इज नॉट इन एनी डाइल्यूशन उसको डाइल्यूट करके नहीं देना है अगर काउज मिल्क दे रहे हैं तो वो जैसा है वैसा ही देना है पुराने जमाने में या बहुत लोग 1:1 डाइल्यूट करके देते हैं वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है जैसे 1 भाग पानी और 1 भाग गाय का दूध वैसा नहीं देना है अगर किसी कारणवश देना पड़ रहा है तो पूरा गाय का दूध ही देना है और अगर बच्चे को सूट कर जा रहा है एक्चुअली काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी जो है ना वो एक बहुत ही अंडर डायग्नोज्ड डिसऑर्डर है इंडियन बच्चों में भी बहुत मिलता है और जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता है इसलिए उसको अभी अवॉइड करने की हम लोग सलाह देते हैं थैंक यू सो डॉक्टर अक्सर जब बच्चों को लोग फीड करते हैं मदर्स फीड करती हैं ये उसमें जो लेफ्ट ओवर होता है हाउ टू डील विद दिस पेरेंट्स या मदर्स जो है उसको रख देती हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर जरूरत पड़ता है तो उसको फिर रीयूज करती हैं हाउ टू रीयूज इट एंड व्हाट प्रिकॉशंस दे शुड टेक सर आप पाउडर जो मिल्क बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं हाँ वो है और भी कुछ जो मिल्क होता है बॉटल फीड जब देते हैं काउ मिल्क और व्हाटएवर इट इज काउ मिल्क तो रीहीट किया जा सकता है बॉईल किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है बट जो पाउडर्ड प्रिपरेशन है जनरली उनको हम बियॉन्ड 30 यूज नहीं करने की एडवाइस देते हैं उसको रीयूज नहीं करने की एडवाइस देते हैं तो जनरली मदर्स को हम लोग बोलते हैं आप कम बनाइए जरूरत पड़ती है तो आप फिर से बना लीजिए तो 2 पार्ट में बनाइए एक साथ बहुत सारा मत बनाइए क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है उसको रीयूज करना एक प्रॉब्लम है उसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना जैसे एक फीड अभी लिया और दूसरा 3 घंटे बाद अगर बच्चा ले रहा है तो हम उसी फीड को दे दें
वो हम लोग नहीं एडवाइस करते। काउ मिल्क को आप रीहीट करके दे भी सकते हैं, बट नॉट वो जो पाउडर्ड वाला मिल्क है उसको हम रीयूज करने का एडवाइस नहीं देते हैं बियॉन्ड हाफ एन आवर 40। आपने बताया कि जब उसको बच्चों को जैसे कम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं तो ये तो मालूम उस वक्त नहीं होता कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी होगी और किस चीज से एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि यू आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब आप कोई चीज उसको फर्स्ट टाइम देते हैं, सोया, एग और एनीथिंग, तो उसको अगर एलर्जी होती है तो उस सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? शुड वी रश फॉर द डॉक्टर और होम रेमेडीज हैं, और शुड वी वेट? जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि कोई भी नया फूड आइटम जब आप इंट्रोड्यूस करो, पहली बार दो। जैसे आपने कहा सोया, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है बेबी को, तो आप सोया यदि देना चाह रहे हो तो उस ड्यूरेशन में आप एक दूसरा मतलब 2 नए आइटम एक साथ मत दीजिए बच्चे को। जैसे आपने उसी दिन आपने उसको सोया भी दे दिया और एग भी स्टार्ट कर दिया, या सोया भी दे दिया और कुछ नट्स का प्रिपरेशन दे दिया, ऐसा। तो पहली बात तो ये कि कोई भी नया फूड आइटम एक दिन में एक ही आइटम आप स्टार्ट करें, ताकि आप पिक कर सके कि किस आइटम से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कम से कम जान सके। जनरली एलर्जी सीवियर जो नट की एलर्जी मतलब 2 तरह की एलर्जिक रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं बच्चे में। एक एलर्जिक रिस्पॉन्स वो होता है जो स्किन में, बड़ों में जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो स्किन में आपको अर्टिकेरियल रैशेस वगैरह फूड आइटम से मिल सकते हैं। और दूसरा तरह का जीआई डिस्टर्बेंसेस मिल सकते हैं, यानी स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी और उनका अमाउंट चेंज हो सकता है। तो अगर आप एलर्जिक रिएक्शन मिल रहा है बच्चे को, स्किन पे मिल रहा है, कई बार होंठ सूज जाते हैं, लाल चकत्ते आ जाते हैं, अगर इस तरह का रिएक्शन मिल रहा है, देन आपको पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर फिजिशियन के पास रश करने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट मांगता है। अगर सिर्फ जीआई वाले मतलब सिर्फ मोशन लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, या फ्रीक्वेंसी 2 बार से 5 बार हो गई है, देन यू कैन वेट एंड वॉच। आप रुक सकते हैं, वो फूड आइटम को आप 3-4 दिन बंद करके देख सकते हैं, या ग्रेजुअली उस फूड आइटम को कम क्वांटिटी में दे के देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में अपन ने वो दिया तो फ्रीक्वेंसी 2-3 दिन के लिए बढ़ गई, उसके बाद ग्रेजुअली बेबी का इंटेस्टाइन एडजस्ट हो गया और वो उसको एक्सेप्ट करने लगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रही है, मतलब 2 बार से 20 बार होना इज ड्रास्टिकली बढ़ना, अगर वैसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। अगर मॉडरेटली आप 2 बार का 5 बार हो जा रहा है, 6 बार हो जा रहा है, तो यू कैन वेट एंड वॉच एंड ग्रेजुअली वो बेबी एडजस्ट कर लेता है उस चीज के लिए। इसके साथ साथ एक और प्रश्न डॉक्टर आ रहा है कि अक्सर बच्चों में, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो ये नहीं डायग्नोज कर सकते कि बच्चा क्राई क्यों कर रहा है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, कुछ और जीआई प्रॉब्लम है। तो उस वक्त बच्चे जो अगर बेवक्त ऐसा कुछ होता है रात के टाइम में या सोने के टाइम में, जब डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो अक्सर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच कि उसको किस तरह से डायग्नोज करने की कोशिश करनी चाहिए, और टाइम पर क्या उसे उस समय ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है या देना चाहिए? जनरली ये जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, जनरली ये लेस देन 3 to 4 मंथ्स के बच्चों में ज्यादा मिलती है। जो ये आप बोल रहे हैं ना, एक्सेसिव रोना, कारण समझ नहीं आ रहा है, छोटे बच्चों में जो मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत मिलती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले तो रोने की वजह को ढूंढना है हमको, यदि तो पहले कुछ वजहों को रूल आउट करना है। बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चे ने लास्ट फीड कब लिया है, बच्चे ने नैपी गीला तो नहीं है, उसी समय पॉटी तो नहीं किया है। दूसरा, जो बच्चे डायपर पहनते हैं या इवन कपड़े की नैपी पहनते हैं, डायपर रैश बहुत कॉमन है बच्चों में, छिल जाती है स्किन। उसके बाद अगर वो छिली हुई है स्किन और बच्चे ने यूरिन पास किया तो भी बच्चा रोता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, बच्चा जो है वो सुसु करते समय ही रोता है, तो आप नैपी खोल के देखो तो डायपर रैश होता है वहां पे।
तो ये कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स घर पे देख सकते हैं अपने आप, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर आप खुद ही देख सकते हैं। फीडिंग कब किया था बच्चे ने, अगर फीडिंग किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं तो हो सकता है बच्चा भूख से ही रो रहा। अगर ये सब चीजें आपने देख ली है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इनमें से कुछ सब चीजें ठीक है, तब जो आप बोल रहे हैं एब्डोमिनल कोलिक पेन बहुत कॉमन है बच्चों में। मतलब ये सब चीजें यदि नहीं है तो जनरली एब्डोमिनल कोलिक या एक्सेसिव गैस पास करते हैं बच्चे, और इवन ब्रेस्ट फेड बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टॉप फेड बच्चों में होता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में भी मिलता है। और तब आपको कुछ मेडिसिन या सेमिथिकोन फॉर्मुलेशन की कुछ मेडिसिन होती हैं ड्रॉप, जो कोलिक पेन को रिलीफ एडवाइस लेंगे डॉक्टर से। और अगर वो बार बार हो रहा है या रात में हो रहा है तो एक आप घर पे रख सकते हैं, कोलिकेड नाम से या सिमिथिकोन फॉर्मुलेशन के ड्रॉप्स आते हैं, जो उस वक्त इन सब चीजों को डेफिनेटली रूल आउट करने के बाद हम दे सकते हैं पेरेंट्स घर पे। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, कि जो लोग बाहर से, जैसे जिनके बच्चे बाहर पैदा हुए, सपोज करो यो यूएस में कोई चाइल्ड बॉर्न है, इज 3 or 4, when they are visiting India, the problem is कि वहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया यहाँ नहीं होता, जो बैक्टीरिया यहाँ होता है वो वहां नहीं होता, तो वो फर्स्ट टाइम they are exposed to this bacteria. So what kind of precautions such traveling parent should take care? वहाँ पे बैक्टीरिया का भी डिफरेंस है, वैक्सीनेशन का भी डिफरेंस है, वहाँ की स्ट्रेन्स भी अलग हैं, जो वैक्सीन कुछ स्ट्रेन के हिसाब से भी यूज हो रही हैं, तो ये डिफरेंस आता है और जनरली ये बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। It's तो natural. बेसिकली पानी का, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बेसिकली जो पानी यूज करें वो डेफिनेटली बॉइल्ड वाटर, आरओ वाटर वही यूज करें। वो लोग हाइजीन का उनको एक्सट्रीमली ज्यादा केयर रखना पड़ता है। बॉटल फीडिंग टोटली अवॉइड कर सकते हैं वो आके, या बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए बॉटल फीड पे। मतलब खुद से ही साफ करें, अपने आंखों के सामने साफ करवाएं, उसको बिना बॉईल करे एक बार भी यूज ना करें बॉटल को। हर फीड के बाद वो बॉटल धुले और वो प्रॉपरली 10 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में रहे। उस ये हाइजीन, बेसिकली हैंड वॉशिंग जो हम कोविड के टाइम इतना फॉलो किए हैं, ये सब भी चीजें उनको फॉलो करना है, वही चीजें बचाती हैं और जनरली वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। बैक्टीरियल नहीं तो वो कुछ फूड आइटम भी ऐसे होते हैं जो वो लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो एक्सपोज नहीं होता उनका इंटेस्टाइन। जरूरी नहीं है कि उनको इन्फेक्शियस डायरिया ही हो, उनको मतलब माल एब्जॉर्प्शन के कारण भी डायरिया होता है, क्योंकि उनका इंटेस्टाइन एक्सपोज नहीं होता है उन फूड आइटम से, जो यहाँ के फूड आइटम हम उनको उस समय लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में नहीं, बड़े बच्चों में, इवन अडल्ट्स में ये डायरिया वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है जो बाहर से आते हैं। सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है वो, कुछ फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जो उनकी इंटेस्टाइन अडेप्टेड नहीं होती है एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉब्लम उनमें होता है और उस तरह का भी डायरिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू। प्रोबायोटिक वो लोग यूज कर सकते हैं प्रिकॉशनरी। और With this we come to the end of this session, और मेरी अपॉलॉजीज फॉर नेट प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि आज पायल जी की आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही थी, बीच में बहुत ब्रेक होती रही। We will sometime again repeat this session, और आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर पायल अरोरा for sparing her time, and we welcome you and we'll see you often on this platform. With this, I'll thank all the participants for sparing their time. Namaste, thank you, all the best. Next week फिर मिलते हैं नए सेशन और नई फैकल्टी, नए स्पीकर के साथ।
तब तक के लिए अलविदा। Hello everyone, welcome back to our all new healthier part. This entire month we have been talking about blood disorders and आज मैं एक important topic के बारे में बात करने जा रही हूँ. Although the patients in this category or the patients with this disease are very small in number, फिर भी I think this is something that we do need to know. And बहुत सारे ऐसे silent carriers भी होते हैं which have some repercussions in the in your offspring या आपके बच्चों में कुछ problems आ सकती हैं. So because of that I think it's quite important to discuss this topic, and this topic is of thalassemia. Thalassemia के आज बारे में आज हम बात करेंगे. So I'm going to just start sharing my slide. I've already discussed this topic once, and let me redo it because हम अगर पूरे महीने blood के बारे में discuss कर रहे हैं तो leaving out thalassemia is not is not an option. So thalassemia, this is a genetic disorder. मतलब कि हमारे genes में हमारे कुछ भी it is not something that we acquire. ये हम inherit करते हैं हमारे parents से. अगर किसी भी patient को thalassemia है, thalassemia minor है या thalassemia intermedia है या thalassemia major है, that means that the parents must have been affected. And this is not, of course, sorry for saying infected because ये एक infection नहीं है. This is not due to a microbe. ये आपके blood में एक genetic disorder है जिसमें आपकी जो globin chains हैं वो कम होने की वजह से आपकी hemoglobin कम रहता है. So it is a blood disorder that is passed down through families. ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये pass on होता है, and इसमें हमारे body में एक या तो एक abnormal hemoglobin बनता है या फिर एक inadequate amount of hemoglobin बनता है. And I think we all know hemoglobin एक वो ऐसा truck driver या taxi driver है जो red blood cells में होता है, and it carries oxygen throughout the entire body. And जब हमारे शरीर में आप जानते हैं when hemoglobin will be less, that means that less oxygen will be delivered to different parts of the body, and the body will be able to function, will not be able to function at their 100%. So this condition is called anemia. इसके बारे में काफी हमने बातें करी हैं. So now let's move on. So this is one more cause of anemia. Usually if I see a patient जिनकी hemoglobin levels will be around 9, 10, 11 तक रहती हैं, and if you ask them कि आपको कोई thalassemia trait है क्या, then they probably don't even know about it because they are just, it's something that does not really affect you. अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता है तब तक हमें इसका पता नहीं चलता है. दे आर क्रॉनिकली लाइक दैट क्योंकि ये बचपन से ही बीमारी होती है तो उनकी बस जल्दी थक जाने की टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू अनदर इंडिविजुअल, but they are not even aware about it. फिर जब thalassemia trait करवाते हैं तब उसमें निकल के आता है कि this is a thalassemia minor patient. Now a thalassemia minor patient is not really required to do much. कोई treatment options उनके लिए नहीं होते and कोई treatment required भी नहीं होता. But yes, the only thing that they need to know is that जो उनके बच्चे हैं क्या उनमें carrier है या नहीं, और जब उनकी शादी होगी तो they should not get married to someone who has a trait as well or has thalassemia. So this is something that we just need to remember. तो इसके बारे में जो genetics है इसके बारे में और बातें करेंगे. So let's see that how does this form. सबसे पहले यहाँ पे इस वाले part में हम गौर करते हैं. I hope my slides are visible and there is no problem. All right. So किसी ने कुछ नहीं So there are malformed red blood cells. मतलब कि जो hemoglobin है वो adequate नहीं है या फिर proper नहीं है, and that is why the red blood cells are not. आपको याद होगा जब हमने अगर इस वाली फोटो में आप देखें तो कैसे गोल आकार है, इसमें जो आकार है वो थोड़ा change हो गया है, and that is why oxygen delivery will also not be adequate. So there are some
जो ये इसमें जो म्यूटेशंस एंड डिलीशंस होते हैं, देयर आर सम चेंजेस इन योर जेनेटिक कोड, जिसके वजह से इस तरह की थैलेसीमिया जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं. एंड देयर कैन बी एक्सेसिव ऑफ अल्फा चेन्स, और देयर कैन बी, इसके बारे में अल्फा और बीटा चेन्स के बारे में हम अभी जल्दी बात करेंगे. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ इट हैपेंस. Now if you see that this particular so this is the father and this is the mother and these are the children. The father does not have the trait proper. अगर आपको थैलेसीमिया मेजर होएगा तो 2 साल की उम्र में आपकी ये डायग्नोसिस हो जाएगी. तो इन थैलेसीमिया मेजर there is no adult who will be diagnosed with thalassemia major, because ये 2 साल की उम्र में आपकी डायग्नोसिस आपको कोई ना कोई दे देता है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है टू गेट द डायग्नोसिस. जो ये हम बात कर रहे हैं, दिस वुड बी थैलेसीमिया माइनर, दिस इज जस्ट अ कैरियर. And they get married to someone who's completely normal, and then there is just a chance, there is a 25% अगर 4 बच्चे होते हैं तो उनमें से 2 बच्चों का होना a carrier is quite possible. So this is how the genetics goes. The disorder, it results in excessive destruction of red blood cells, which leads to anemia. तो क्योंकि ये malformed red blood cells होते हैं, so then the body understand that this is not normal and इसको हम destroy करते हैं, and हमारी जो body है that destroys these red blood cells, and thus we end up with anemia. So anemia आप सब जानते हैं, this is one condition जिसमें हमारी healthy red blood cells नहीं होने के कारण oxygen delivery to all parts of the body is limited. So again, I would repeat that this is an inherited disorder. मतलब कि आपको ये अपने parents से मिलती है. One of your parents has been a carrier or has had the full disease. So this is, of course, again, there can be a mutation or there can be some deletion in your genetic code, and that is why you get the disease. So coming to thalassemia minor, this is a less serious form of the disorder. जैसा मैंने बताया कि this is usually an adult who's chronically, वो कहते हैं मेरा hemoglobin हमेशा कम ही रहता है, 9, 10, 11. इनका thalassemia trait करवाइए and they will definitely have some sort of, they will usually have, I will not say definitely, but they will usually have thalassemia trait, or they will be diagnosed with thalassemia minor. So there are 2 main forms of thalassemia that are more serious, which is alpha thalassemia and there is beta thalassemia. So the alpha thalassemia में alpha globin chains जो हैं इनमें mutation होता है, और beta thalassemia में beta chains जो हैं ये affect होते हैं. Thalassemia की सिम्टम्स क्या हैं? हम अगर एक सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज ऑलमोस्ट की हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि बोन डिफॉर्मिटीज आपको इसमें दिखती हैं, क्योंकि जो फ्लैटर बोन्स हैं, यू विल ऑलवेज सी दैट देयर विल बी सम डिफॉर्मिटीज इन दीज बोन्स. यूरिन जो है ये यूजुअली डार्क कलर का यूरिन होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल. तो आपको हमेशा इनका पेशेंट्स का यूरिन जो है ये डार्क कलर का मिलेगा. और अगर 2 साल के बच्चे में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं थैलेसीमिया मेजर के लिए, इनको स्क्रीन करवाना चाहिए. डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन आपकी जो ग्रोथ है बच्चे की वो एप्ट नहीं है, डिलेड ग्रोथ है, और डेवलपमेंट जो है वो सही नहीं लग रहा 2 साल के बच्चे के हिसाब से. So this is another symptom that you can take care of. So excessive tiredness and fatigue, अगर अनीमिया होएगा तो ये तो होना लाजमी है. येलो और पेल कलर्ड स्किन, तो फीका इनका स्किन रहता है, जो एक चेहरे में लाली होती है बच्चों के वो नहीं दिखती. एंड one more thing that we need to be aware of is that not everyone has visible symptoms of thalassemia. So usually all the patients of thalassemia major would be diagnosed at the age of 2, but sometimes you can even see it later in childhood or in adolescence. लेकिन adult आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको थैलेसीमिया मेजर की डायग्नोसिस उनको अडल्टहुड में मिल रही हो. So now this is a typical phases of the thalassemia patient. तो आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए ये frontal bossing है. This is frontal bossing, which means that थोड़ा सा उठा हुआ इनका सर आपको दिखेगा. जो आई है वो यूजुअली ऐसे स्लैंटिंग आईज इनकी दिखती हैं. इनकी जो नेजल ब्रिज होती है, यहाँ से जो हमारी नाक ऐसे निकलती है, देयर इज अ एंगल हियर. ये एंगल जो नेजल ब्रिज है ये थोड़ा सा लोअर होता है. तो आप देख सकते हैं द नेजल ब्रिज इज अ लिटिल लोअर एंड देन यू विल सी प्रोट्रूडिंग फ्रंट टीथ. ये जो फ्रंट टीथ है ये आपको प्रोट्रूडिंग दिखेंगे. सो दिस इज, एंड आई मीन दिस इज नॉट आवर पेशेंट, दिस इज द पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट इन्होंने दे वर सो स्पोर्टिंग टू टेक दीज पिक्चर्स एंड पुट इट अप ऑन द इंटरनेट. सो आई होप द पेशेंट इज डूइंग फाइन.
So, what are the causes of thalassemia? Again, it's because of some mutations, and इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे. There would be a mutation in your genetic code, and that is how you would get it, and you would inherit it from your patient. So, ये आपकी गलती नहीं है, ना आपके parents की गलती है. This is just an genetic abnormality that you have inherited. So, if only one of your parents is a carrier of thalassemia, you may develop a form of the disease known as thalassemia minor. So, अगर आपको thalassemia minor होगा, तो most likely you will not even have symptoms, but आप carrier होंगे. So, you have to just be careful that whenever you get married and you're going to plan to have kids, I'm getting this message that my slides are not changing. So, I don't know what to do about this, because every time there is this problem. Because जब अभी यहाँ पे मैंने बंद किया है, तो it's on the slide that I was on. Let me just see. So I'm just going to. No, Sakshi, I can't send it to you because sometimes I need to flip through the slides and go to the end as well. So I'll just try to do this again. So now we've tackled this. Now this is an important slide, and I hope this is being shown. If it's not being shown, Sakshi, you'd have to text me instead of messaging on StreamYard, because StreamYard में मुझे दिखता नहीं है when my screen is full sized. So I'm trying to show this picture, a diagram with a lot of males and females and their offspring. I hope that that is visible. Okay, fine. So now let's look at this scenario. जहाँ पे there is one patient, there is so जो mother है, इनको proper thalassemia major है, and यहाँ पे जो father है, he is just a carrier. So यहाँ पे you can see that it is not मेल एंड फीमेल में कोई एज सच फर्क इतना नहीं पड़ता, बट लेट्स सो व्हाट आई वुड से इज दैट हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग would be carriers still, and दो जो offspring हैं out of 4, which is half of the offspring, would definitely be a patient. So this is not a very smart thing to do. So let's see again, यहाँ पे इस situation में जहाँ पे दोनों ही parents जो हैं ये patients हैं, तो इनके सब offspring जितने भी बच्चे हैं, 100% of the kids would have the disease. Now let's look at this condition. So it is the best case scenario if this patient is a patient, so इनको they should get sort of married to a person who's absolutely normal and unaffected. So now coming to this case scenario, जहाँ पे एक absolutely unaffected है और एक parent जो है वो carrier है, तो इनमें 50% of them would be carriers and 50% of them would be normal, and यहाँ पे दोनों carriers हैं, तो इनमें से आपको एक, तो this is definitely something that you need to avoid. And इसीलिए हम कहते हैं ये जो medical कुंडली बनाने की बातें होती हैं, so this is what the whole thing is, that if you are a carrier, then there's nothing that you can do about it. But what you can do is that you can make sure that you don't have offspring with a person who is going to who is also a carrier. तो ये अगर आप दोनों ही carrier होंगे, तो क्या है, एक thalassemia patient होने की आपके offspring की chances बढ़ जाती हैं. So that is 25% of your offspring might have the proper trait, and this is not good. This is something that we should avoid at all circumstances. ये हमें नहीं होने देना चाहिए. So 2 carriers should not get married. There are different types of thalassemia. There is beta thalassemia, there is alpha thalassemia, and then there is thalassemia minor. This includes, the beta thalassemia includes the subtypes major and intermediate. So you can have beta thalassemia major and you can have beta thalassemia intermediate. Alpha thalassemia में और subtypes हैं, उनका नाम है subtypes hemoglobin H and hydroxyphetalis. इसके बारे में बात करेंगे. And then there is thalassemia minor. So इनकी जो symptoms and severity हैं ये change होते रहती हैं. Let's see जो क्या treatment options available होते हैं इन patients के लिए. That is blood transfusions,
इनको जिन लोगों को जो पेशेंट्स होते हैं, सो जो द लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस दैट इफ देयर इज एनी थैलेसीमिया माइनर पेशेंट, they usually do not require any treatment. The patients who अगर कोई बीमारी हो, या फिर if you've had COVID recently, or if you've just had a viral illness, या फिर कोई बड़ी बीमारी दूसरी हुई, तो हो सकता है आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं ये थोड़े और गिर जाएं, बट इससे ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी. थैलेसीमिया माइनर पेशेंट यूजुअली डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट. बट थैलेसीमिया मेजर पेशेंट, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? यू हैव टू हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. इनको अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रेगुलरली कराने होते हैं. इनके पास में एक ऑप्शन होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, बट अगेन सो दैट इज इन द सिवियर केसेस medications and supplements इनको दिए जाते हैं. There is possible, there can be a possible surgery to remove the spleen or the gallbladder. तो spleen जो है इसका काम है जो डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको रिमूव करना. तो अगर बहुत ज्यादा इस पे लोड आता है तो स्प्लीन जो है ये बहुत बढ़ जाता है साइज में, एंड दैट माइट बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम. So, doctor is not to take vitamins or supplements containing iron. So this is one thing that you need to keep in mind. That iron containing जो supplements होते हैं, multivitamins होते हैं, इनको ये मना किया जाता है. This is especially true if you need blood transfusions, because people who receive them accumulate extra iron. तो जब blood transfusion हमारा होता है तब उसमें आयरन का जो कंटेंट है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया occurs when your body can't produce beta globin. बीटा ग्लोबिन जो है ये हम बना ही नहीं सकते, एंड ये दोनों जीन्स जो हैं हमारे, जब ये गड़बड़ होते हैं तब यू गेट दिस पर्टिकुलर सबटाइप थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया इंटरमीडिएट. So thalassemia major is the most severe form of beta thalassemia, and this develops when the beta globin chains are missing. The symptoms of beta thalassemia, they usually appear before a child's second birthday. The severe anemia related थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स हैं इनकी 2 साल की उम्र के पहले ही इनके सिम्टम्स आने लग जाते हैं. एंड इसमें यू कैन सी अभी क्या हमें 2 साल के पहले हमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं. यू विल सी दैट दिस चाइल्ड इज एक्सेसिवली क्रैंकी, बहुत ज्यादा फसी है. इसका जो चेहरा है उसमें चेहरे में लाली नहीं है, देयर इज जस्ट अ पेलनेस, एक फीकापन है. बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होते हैं. एपेटाइट जो है, भूख नहीं लगती, and there is a failure to thrive. So this is FTT is one thing that is very common in the pediatric language में बहुत इसको बोला जाता है. So which means that जो growth and development है ये proper नहीं है, appropriate with the age of the child. इसके अलावा जॉन्डिस, आपको एक पीलापन दिख सकता है शरीर में. जो ऑर्गन्स हैं वो एनलार्ज हो सकते हैं, लिवर का एनलार्जमेंट हो सकता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो सकता है, बिकॉज ये दे आर ट्राइंग टू क्लियर आउट ऑल द रेड ब्लड सेल्स. एंड सो दिस इज यूजुअली दैट पर्टिकुलर सबटाइप जिसमें frequent blood transfusions लगते ही हैं. There is no other choice. So thalassemia intermedia, which is a less severe form. इसमें आपको जो बीटा ग्लोबिन की चेन्स हैं, दे आर इसमें भी ऑल्टरेशंस होते हैं, बट दे आर नॉट मिसिंग. इन थैलेसीमिया मेजर दे आर मिसिंग, एंड पीपल विद थैलेसीमिया इंटरमीडिएट दे यूजुअली डोंट नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बहुत सिवियर इनको ये बीमारी नहीं होती. So this is something that you can also keep in mind. So ये वो diagram है that shows the alpha and beta chains. तो ये जो pink chains आपको दिख रहे हैं, they are the alpha chains and these are the beta chains. तो आप imagine करो जब ये beta chains पूरे completely नहीं होते, then you get thalassemia major, and when there are mutations in the beta chains, then you get thalassemia intermedia. अब हम बात करने जा रहे हैं थैलेसीमिया अल्फा की, एंड जब ये अल्फा ग्लोबिन नहीं बना पाते, देन यू गेट समथिंग कॉल्ड थैलेसीमिया अल्फा. एंड इसमें जो 4 जीन्स हैं, इसमें आपके they come 2 from each parent, you get the 4 genes that make the alpha chain, and यहाँ पे कहीं पे भी एक में भी गड़बड़ होने से you can develop these subtypes. तो ये इसके कौन से subtypes होते हैं? There is hemoglobin H.
सो जब तीन मैंने आपको बताया 4 जीन्स होते हैं, तो इसमें से जब 3 मिसिंग होते हैं, देन यू हैव दीज चेंजेस एंड इट कैन लीड टू बोन इश्यूज. सो हीमोग्लोबिन H में यू कैन हैव बोन इश्यूज. यू विल सी दैट द चीक्स, फोरहेड एंड जॉ, दे मे ऑल ओवरग्रो. सो हीमोग्लोबिन H में आपको जॉन्डिस भी दिख सकता है, लार्ज स्प्लीन भी दिख सकता है एंड मालनरिशमेंट आपको दिख ही सकता है. Hydrops fetalis, this is a very very rare and severe form of thalassemia that occurs before birth. पैदा होने के पहले ही इसमें आपको सिम्टम्स आने लग जाते हैं एंड दे आर यूजुअली स्टिल बॉर्न, मतलब बच्चे कोख में ही दे लूज देयर लाइफ और दे डाई वेरी वेरी सून आफ्टर बीइंग born. So this is hydrops fetalis, not compatible with life. So thalassemia can quickly lead to anemia. So this is almost thalassemia and anemia are synonymous, and this is one thing that we can remember. So anemia ke symptoms mein I will not go through them again. Diet for thalassemia. So this is one common question that is asked. Remember that there is no one diet. There is no diet that can cure thalassemia. Thalassemia is a genetic disorder that has no हम इसको बस सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम कुछ ऑप्शंस हम दे सकते हैं, बट इस बीमारी से का इलाज नहीं है. देयर इज नो क्योर. So a low fat plant based diet is what you require. जो iron rich food है इनको हम थोड़ा कम खाने बोलते हैं for the thalassemia major patients. For the minor patients there is not much limitation, to be very honest. Fish and meats are very rich in iron, so you are supposed to stay away from them. So कुछ fortified cereals, breads and juices, these can also contain iron. तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आपका आयरन से फोर्टिफिकेशन कोई भी खाने में नहीं होना चाहिए. फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो सकती है एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन टेक. So even thalassemia minor patients can take folic acid. So low iron diet, this is what a thalassemia patient is supposed to do. They are supposed to take a low iron diet. They are supposed to take drink tea. आयरन के बर्तनों में इनका खाना नहीं बनना चाहिए. सीरियल्स में जिसमें आयरन की कंटेंट बहुत ज्यादा है, ग्रेन्स में, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए. सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन रिमेम्बर. डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपको आप खा सकते हैं. विटामिन ई इज गुड फॉर यू, कैल्शियम एंड विटामिन डी, दीज थिंग्स यू कैन कंज्यूम. So in सब चीजों में, so you know we just talked about iron deficiency anemia and we talked about how these foods should be incorporated in your diet. So इन सब चीजों में iron ज्यादा होता है, तो इन सब चीजों को thalassemia के patients को avoid करना चाहिए. So again if you come to the prognosis, मतलब इनकी survival rate क्या होती है या फिर इनकी lifestyle कैसी होती है, we have to see this. This is a genetic disorder. There is no way you can prevent it. You are born with it. And in कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो इनको लगानी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया दे फ्रीक्वेंटली सफर विद इन्फेक्शन एंड रिपीटेड इन्फेक्शंस. तो कुछ इन्फेक्शंस जो हैं दे कैन, बिकॉज योर इम्यूनिटी, इनकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम रहती है, तो इनको वैक्सीन जो हैं ये तो लगवाने चाहिए. Healthy diet they should maintain, and this will all increase their chances of, they'll increase their lifespan. So ये इन चीजों का ध्यान रखना है. We've talked about this. So life expectancy की अगर बात करें, बीटा थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, they usually they live up to 30 to 40 years. This has increased in the last few years, and the shortened lifespan has to do with iron overload. So अगर इस चीज का ध्यान रखें तो इसको हम इनकी lifespan जो है ये और हम बढ़ा सकते हैं. So these are the different treatment options. I'll just skip it because we're running a little short of time. So now marriage chart की अगर हम बात करें, so this is the main question that people usually ask when it comes to thalassemia. So normal to normal, there's no problem at all. A normal patient, a normal girl with a carrier, there is it's fine, there is no problem. When it comes to a normal girl and a carrier girl and a normal boy,
then also this is fine. But अगर दोनों carriers हैं, so this is not recommended because as such इनकी married life में कोई problem नहीं आएगी, लेकिन जब इनके बच्चे होंगे तो बच्चों में 25% offspring might have thalassemia major, and that is something that we don't want to do. So we encourage that nutritious diet and physical activities maintain करें. जो भी thalassemia के patients हैं, they should try to incorporate physical activities. Of course, अपने blood transfusion से इसको आप अपने जो doctors हैं उनसे बात करके ही करें. But yes, physical activity is encouraged. So I am just going to end the show. So these are some questions that I had from when we took the session last. How can you increase the hemoglobin in minor patients? Just diet increase करवाइए इनकी, folic acid के इनको treatment आप दे सकते हैं. Slides are not changing. Yes, doc, it's there, but please continue with where you left that while getting married need to be cautious. And has minor traits, so I'm asking. So, अगर आपके younger son को minor trait है, तो just make sure that whoever he gets married to, or just educate him that he should get married to someone who does not have a trait at all. For mild thalassemia, no treatment is required. Pooja Silji. So I think those are all the questions. Thank you everyone for joining in. It's a pleasure to see so many people joining in and supporting our show. Thank you very much. We'll be back on Thursday with another topic related to blood. If there is any topic related to blood that you want us to discuss, please do put it down in the chat box and we'll try to address those. Thank you so much. Thank you. We'll be back on Thursday. See you then. Lovey bags and shoes. विश्व थैलेसीमिया दिवस आज। रोग के खात्मे के लिए जागरूकता जरूरी। रक्तदान के लिए अधिक से अधिक लोग आए आगे। आज थैलेसीमिया डे है और देश में लाखों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में ब्लड की कमी होने से ऐसे मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक आनुवांशिक रोग है जो माता पिता या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है। इस रोग के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन का असामान्य प्रोडक्शन होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड फ्लो के साथ बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी संख्या कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन के साथ ही खून की भी कमी होती है और ऐसे मरीजों को बार बार ब्लड की आवश्यकता रहती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देश भर में ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, उससे थैलेसीमिया रोग से पीड़ित लोगों को काफी फायदा मिला है। थैलेसीमिया के लक्षण ये होते हैं कि अक्सर थकान महसूस होती है और कमजोरी महसूस होती है। शरीर का रंग पीला पड़ता है। चेहरे की हड्डियों के आकार में गड़बड़ी होती है। पेट के हिस्से में अक्सर सूजन बने रहना, शरीर के विकास में रुकावट और गहरे रंग का यूरिन आना। वहीं थैलेसीमिया आपको बता दें 2 प्रकार का होता है, मेजर थैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया ये उन बच्चों को होता है जिनके माता और पिता दोनों के जीन्स में गड़बड़ी होती है। यदि माता और पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो होने वाले बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने का खतरा अधिक रहता है। माइनर थैलेसीमिया ये बीमारी उन बच्चों को होती है जिन्हें प्रभावित जीन्स माता या पिता द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से पीड़ित थैलेसीमिया के रोगियों में अक्सर कोई लक्षण नजर नहीं आता। ये रोगी थैलेसीमिया वाहक होते हैं। थैलेसीमिया का इलाज करने के लिए नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत होती है। कुछ रोगियों को हर 10 से 15 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता है। सामान्यतः पीड़ित बच्चे की मृत्यु 12 से 15 वर्ष की आयु में हो जाती है। सही उपचार लेने पर 25 वर्ष से ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। इस बीमारी से पीड़ित रोगियों को विटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स और संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है, जबकि गंभीर हालत में खून बदलने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पित्ताशय की थैली को हटाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को हर साल औसतन 10 यूनिट खून की आवश्यकता पड़ती है। पीड़ित को महीने या फिर 1.5 महीने के अंतराल में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा नहीं होने पर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इलाज और रक्त चढ़ाने के बाद ही उसकी स्थिति में सुधार होता है। रक्त की इतनी आवश्यकता की पूर्ति निकट संबंधी तक नहीं कर पाते। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदाता उनके लिए जीवनदाता साबित होते हैं।
प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से मिली जानकारी के अनुसार एसएमएस में हर रोज 40 से 50 थैलेसीमिया रोग से पीड़ित मरीजों को ब्लड की आवश्यकता रहती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान के लिए आगे आएं, ताकि इस गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों को जीवन दान मिलता रहे। हमारे समाज में खासकर हिंदू धर्म में शादी से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, मगर यदि हमें बच्चों को थैलेसीमिया होने से बचाना है तो लड़का और लड़की की स्वास्थ्य कुंडली मिलाया जाना बेहद जरूरी है, जिससे पता चल सके कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं। Kati ya sir Leo? Sir. I think I should wait for 1 or 2 minutes, let other people join it as well. Okay. So let's be on the screen. Let me just wait for just a minute or so. Let other people join, because some people are having difficulty in joining. Just take a confirmation from Sunil once again, and so that we can start. Should we start? Hi, good evening, everyone, and a very, very warm welcome to TBMC IE Gurukul. And you are all very, very warmly welcome here to the new journey that you've just started. I guess many of you still haven't started it yet, have not stepped into the medical college, but yeah, you are probably awaiting for the class to begin with. Well, just to formally introduce myself, Dr. Ashwini Kumar, and I'm a faculty of human anatomy. I've been teaching wonderful people like you for a long, long time now. And this is not just my profession, this is my passion also. And I'm extremely, extremely glad to be catering the first year students, the people who are just starting with the human anatomy, because this gives me immense pleasure. Okay, these are the people who are going to stay with me for the entire year, and I will get a chance to make up this subject as easy as I could. The subject which is usually feared by people, they run away from human anatomy. It's a huge, huge subject. You all have come through the competitive exam, so you know that the burden of the physics and chemistry and biology. And imagine once you enter the medical college and you come across the subject called as human anatomy, which alone is equal to all the 3 subjects that you've done, probably more than that. Well, it's just a new beginning. It's like learning a new language, and when you want to learn a new language, obviously you should know about the alphabets of that particular language. Then only you can form the sentences. What I've seen in this a career of mine, that the people, even the people who are in second year or final year, even after once they've completed their MBBS or even their post graduation degree, they still find this subject as scary as this picture is. And the reason is, the first year is like too early to be exposed to the subject like human anatomy, but we can't help it because we have to start with the human body, and then we can think about anything else. So though it is a very basic for every medical student to know about the details of human anatomy, but yeah, fortunately or unfortunately, the system is like this, that you get 1 year, and in that 1 year, apart from physiology and biochemistry, which themselves are extremely, extremely important, every subject is important, of course, but people usually think that we don't get enough time for the subject like anatomy. Here, this motive of this lecture here is, one, to tell you that how we're going to approach the subject, number one, which we will see.
Second main thing is also to make you understand that how we want to make you or keep you ahead in your college curriculum. Most of the time, the same kind of curriculum is followed in all the medical colleges in India. They generally start with the general anatomy. We have like some 4, 5, 6 lectures on the general anatomy. Then they start with the upper limb thorax. So most of it, there could be 1 or 2 variation, but yeah, this is the usual scenario we have. They start with this part and followed by the same topics, most of the colleges here. Our plan is that even before you start that topic in your college, we want you to be very, very well versed with it, so that when you sit in the lecture hall or when you go to the dissection lab in your college, you have it altogether a different understanding and you find yourself at a different level only. When your colleagues, your peers will be looking at some structure of human body in the dissected human body, they might be thinking about, okay, what is this? This might be this. Somebody is telling the name. The demonstrator might be explaining you. But if you have already the understanding of everything in that portion, then you will really feel the king of the table, and you can kind of feel like I'm leading the way into that particular topic. And this confidence is very much needed, because this journey, which before getting into the MBBS, people used to say just get into MBBS and the life will settle and everything will be done and dusted by then. No, the point is journey actually now begins. So this is not the end of the hard work. This is the beginning of the hard work from here on. Well, I'll not take much time of yours and we directly go on to the topic. This lecture, I've decided that we'll talk about in this lecture about the human skeleton. Well, what better topic we can take, because we have to discuss human anatomy and the more core structure. The entire framework is about human skeleton. Second reason I chose this topic in the general anatomy, and rather than choosing just to tell you about the terms of anatomy which we can do, is that this is something which you have done a bit in your +1 and +2 also. You all must have read the topic movement and locomotion, right? And in that you've read about all the 206 bones, which bone is present where, yeah, you know that. Right? And what I've seen that people in +1, +2, they find a bit difficult, because those names, those terminology, we try to remember the names of those bones, but we haven't seen those bones. So we will make today's lecture quite a visual treat, so that if I say a bone called as ethmoid bone, so you should be able to see where the ethmoid bone is. So the day you enter in your DH, in your demonstration hall, when you go in there, when you look at the human skeleton, you should be able to point out the bone and you can tell, okay, at least I know that what bone is that in your initial phase here. Before we get started, I want to put across few things here, guys. Number one, this subject, in fact, any other subject from here on, will need a lot of new terminology, and that will create complete new language for you. Like now we'll not be saying forward and backward. We'll be saying like anterior and posterior. We will not be saying outside and inside. We are saying lateral and medial. We'll be using the word dorsal and ventral, proximal and distal, caudal and cranial. So all these terminology, which you may not be very well aware of right now, few of the terms you may have read in your biology also, but not all of them. So we'll be gradually incorporating these terms so that you can go from that point on. If I try to teach all the terminology on one day, on the first day, well, I can do that. But the point is, you will not be able to retain them. And more importantly, you will not be able to apply them. So I want to discuss this topic of human skeletal system and its how we classify it, so that we will keep talking about some terms of human anatomy on that human skeleton, because this topic seems to be a connection between the biology that you've read, especially I would say the human physiology part, and the anatomy part in there. Right. So without a further ado, let's get started. And I would definitely love to have your feedback after the class is over in the Telegram group we are all in. I do have a Facebook group of my own. There are like almost 80,000 people across the world which are there in that. I want you to be the part of it. I'll share the detail of that. I do have my YouTube channel again, which is having more than 70,000 people catered all around the world. So I want you to join those Facebook group and YouTube channel, so that you can be motivated when you see what kind of things you are going to read in future. And there's a lot of stuff in there. You might not be needing it as of now, but yeah, eventually you will. Chalo, let's get started. So guys, we will talk about the skeletal system. And
I would want all of my students to develop one habit from the first day of writing it down. And this habit will go a long way in this career of yours. You are going to read 19 subjects in the course of this 5 year, guys. Imagine how many books, how many reference books at one place. The sector will have one tall story only. Therefore, you should be having a habit of writing it down. The people who have a habit of making their notes, writing it down, they find their life a lot easier in the later part. So why wait for the later? If this is a day one, let's start from today itself. So I would request you guys to grab a piece of paper, grab that pen, and whatever we discuss here, even if you know that, I would still want you to write it down, because once you're done with the lecture, you want to have a look at that page and you can say, okay, this is what I've learned today. Everything is given in the book, right? Everything is given in the book, but you have to extract the information which we need to read and revise. So there we go, guys. Skeletal system. Well, this is no new thing for you. You all know that we have a 206 bones in human body till the time they're intact, right? So we have 206 bones, but yes, the number varies at the time of birth and later on, because at the time of birth there are many bones. There are many bones in human body which are not developed, number one, and there are many bones which are separated by hyaline cartilage, which makes them not one, which makes it two bones actually. So the number, obviously at the time of birth, the number of bones are way more than 206, and the number is quite variable. We will come to that part. When we talk about the skeletal system, obviously we divide the entire human skeletal system, guys, in the axial skeleton, that is axis, this portion here, and appendicular skeleton, which is about the upper limb and the lower limb. And today's lecture, we will be looking at every single bone in the human body, not only writing it here. I want you to show a 3D animation for every bone so that you can have one pictorial memory of that bone in your head. And whatever you read in your +2 and now reading anatomy, I want you to correlate that part here. So starting with the axial skeleton. Axial skeleton. Well, you know the word axial came from the axis. So this midline skeleton is the axial skeleton. Now, what is there in axial skeleton, guys? Axial skeleton includes skull. It includes skull. It includes skull. And when I say skull, it is having bones. This is called as a cranium bones. We have some bones on the face that is called as facial bones. Then we have one very special bone in the neck region called as hyoid, and we got bones in the ear called as ear ossicles. Ear ossicles. It's a good topic to start with, because most of the people can connect here, because they know we read something like this in our UG time also, for the preparation of the UG time. So guys, cranium. When I say the word cranium here, the cranium also called as a calvaria, cranium or calvaria. This is the cranium part here, of course, the one which is protecting the brain. And this cranium is having 8 bones in it, which we want to see. There are 14 bones present on the face. There is one very special bone called as a hyoid bone. I'll tell you why it is special. And of course, we have 6 ear ossicles, 3 on each side. Malleus, incus, stapes, you know that, 3 ear ossicles. Let us start with the cranium bones. Even if you know the names of these cranium bones, I want you today to have a pictorial memory of these bones in there. So there we go. Let me take you to this skull, guys. So here is the Mr. Skull in front of you, and let's find out what are those cranial bones we have. So before we write down those names, I want you to understand those nomenclature. Okay, so when you talk about this part, calvaria, there's a bone which is present in the front, and of course the name goes like, we call it a frontal bone. So we have just one frontal bone from right to left. It is single bone only that you're looking at in the yellow color, frontal bone. You turn the skull and you go on the back side. Look at this. When you turn the skull and go on the back side, can you see the purple color bone here? So that is a bone which is present here on the nape region. That is the occipital bone. You can call it occipital or occipital, OCC. So that's an occipital bone. Occipital bone is behind and the frontal bone is in front. So this is one bone here and there's one bone there. Now you go on to the top here. Now if I turn the skull like this and you're seeing it from the top, look at this, guys. You're seeing it from the top. You're seeing it from above. So these bones that you see, the one which are shown in the orange color here, these are the parietal bone. The word parietal
in Hindi will remind you of the pari. Pari is an angel, and angel do have that angel ring on them. So we have the parietal bone here, right at the top here. So the two bones over there are parietal. The yellow one is what? That is frontal. The purple one here is what? That is occipital. And then you're looking at the two bones as of now in here. That is the parietal bone. Okay. Let me take it to the side, and then you appreciate a green colored bone. Now you're looking at the side. Now what is this green colored bone over there? Guys, this bone is called as a temporal bone. Temporal. When you go to the temple, or when you see a temple, how you do it? You do like this. You just go to the temple and you do like this. So basically you're touching in this region, which will remind you that the bone which is present in here is called as a temporal bone. The temporal bone, the one special feature that you should know for now is the temporal bone is the one which is having the opening for the ear. External ear opening is present in this green colored bone, and that is the temporal bone. And we have two temporal bones, the one on the left side, and similarly you can see it on the other side also. You can see the two temporal. So it's a paired bone basically, temporal bone. After temporal bone, look at that. Look at the blue colored bone. Let me enlarge this for you. And I wanted to focus on this dark blue one, guys. This bone here is the sphenoid. Now the confusion people usually have with the sphenoid bone is they think we have two sphenoids. No, we don't. We have one sphenoid you're looking at here, but you might say, if I turn the skull, then I might see the sphenoid on the other side also. You will say that is also a sphenoid bone, right? That is also sphenoid. But that is the same sphenoid only, guys. We have just one sphenoid which is running downward on the base of the skull and can be seen on the other side. This is actually called as a greater wing of the sphenoid bone. When you look at a sphenoid bone separately, it looks like a butterfly. I cannot show it to you right now, but when you look at the sphenoid bone, it looks like a butterfly. So it is having wings. We have lesser wing and greater wing. This is the one which you see on the outside, and we call it the greater wing of the sphenoid bone. And look at this. The best way to look at the sphenoid bone is if I see it from the inferior aspect. If I see it from below, let me turn the skull, and there we go. Look at that blue colored bone, guys. Doesn't it look like a little like a butterfly only? Like this is a butterfly here, which is having a wing on the outside. That is one wing over there, and there is one other wing over there. But it's one sphenoid bone having wings on both the sides. So just like we have one frontal, one occipital, we have one sphenoid. But temporal were two, parietal were two. What is remaining? So there is one bone which is still remaining that we haven't discussed, and that bone is a bit difficult to identify because the bone is quite inside. Without you remove certain part of the skull, you cannot see that bone very well. And that bone is called as an ethmoid bone. Ethmoid bone. If I have to show you the ethmoid bone in the skull here, there are only two ways to look into it. Number one, either you see in the nose, nasal cavity, or you see in the orbit. Now let me take you inside the nose, guys. If you go inside the nose here, look at that. Can you see the cream colored bone over there? This one here. That over there, this creamish colored bone here, this is the ethmoid bone. You can have a part going on this side and this side also, but yeah, the bone is what? That is an ethmoid bone. That bone is ethmoid bone. You can also appreciate ethmoid bone from this side. Look at that. When you see the orbit, just don't pay attention to any other thing. Look at the cream colored bone over there. This one here is the ethmoid bone. You can see it from the orbit side here. So you have some contribution of ethmoid in the ear, in the eyes, in the orbit, I should say, and some contribution of the ethmoid in the nasal cavity. And again, ethmoid bone is one. Although you see it in this orbit also, you will see it in that other orbit also. That again is ethmoid, but that's the same ethmoid bone having projection on both the sides. It is projecting to both the side here. So guys, out of all the bones we discussed, what are the single bone we have? We got what single bone? We have a frontal bone. Just have a quick look at that once again. Here we have a frontal bone. We turn it to the back side. You can see what bone is that? That is an occipital bone. We turn the skull and we see it from the top part here. That is the parietal bone. These are the two parietal bone. You go to the temple, you put your hand on the ear on the side. That is a temporal bone. To the temple is temporal bone, which is having this opening also called as external auditory canal. You don't have to go into that detail for now. External auditory canal. External is outside. Auditory means hearing. Canal is canal. You know what is canal. So that's an opening of the external of the ear. We call it external auditory canal. Then you have another very important bone here. Look at that blue one. That is what? Sphenoid. Greater wing of sphenoid. And you have a sphenoid. Rest of the sphenoid bone is present below. We go to the other side and the sphenoid bone can be seen on the other side as well. So we have a single sphenoid bone. And just to give an additional touch here, can you see this point where all the four bones are meeting? This H-shaped
Suture, you know the suture. The skull bones are connected to each other by the joint called as the sutural joints. They are sutures. So this H-shaped suture where we have what 4 bones? I'm pointing it and I want you guys to say this to yourself. What bone is that? This one is parietal. What is the yellow one? The frontal. What is the green one? Temporal. And what is the blue one? That is sphenoid, the greater wing of sphenoid. So all the 4 bones are meeting at this point, and this is a relatively weak part of the skull. That's a relatively weak part of the skull. So let's say if you fall on the side, if you don't wear a helmet, and if you have a road side accident, if you fall on the side of the head, so there are chances that this part will get fractured. And the problem with the fracture of this part is that exactly inside this part, we have a very important blood vessel. I should not tell you the name of that blood vessel for now. There is a very important blood vessel present inside, which will rupture, and that will lead to the hemorrhage, extradural hemorrhage. Outside the dura mater, but inside the cranial cavity, there will be a hemorrhage. It's not an intracerebral hemorrhage. It is not a hemorrhage of a brain. It is a hemorrhage outside the meninges of the brain. That is because if you have a fracture or injury at this point here, that is, this point here is called a pterion. You don't have to remember it for now. We will be discussing everything in detail. Just an extra point so that you can remember that what 4 bones are meeting here. What 4 bones? Frontal, temporal, parietal, and sphenoid. Which part of sphenoid? Greater wing of sphenoid. And guys, the one bone we said, which you can see from the nasal cavity and orbit, that is the ethmoid bone. Look at that cream colored bone inside. That is the ethmoid bone, which looks like this M-shaped bone that you're looking at here. That is a ethmoid bone. And you can also appreciate the ethmoid bone from inside the orbit there. That bone over there, which is on the inner aspect, is called as ethmoid. Let me introduce first general anatomy term to you. And if I say orbit, this wall is what wall? Now, in general English, you will say, guys, this wall is an inner wall, this wall is an outer wall, but not in anatomy. You will not say inner outer. You will say medial and lateral. Anything which is close to midline, we call it medial, L, medial. And anything outside is called as a lateral. And these terms are comparable terms. When you compare two things, then you say one is medial, one is lateral. It does not mean the thing which is medial is always medial to everything. No. It's a comparison. Like if you look at my left hand finger and right hand finger, my right hand right now is